Bismillahirrahmanirrahim. Assalamo-o-Alikum. Welcome back to my channel. Brother here. Today in this video, I'm starting the Calculus and Analytical Geometry book, MTH101, that the students are going to study in which University of Pakistan. So the first lesson is about coordinates, graphs, and lines. And before going on to that, first of all, you see that what is calculus. What is the basic meaning of calculus? So calculus basically means that a way or method or system that is used to calculate and that is used for reasoning. If you look at it in detail, calculus, study of continuous rate of change of quantity. It is a study of how various quantities change with respect to other quantities. For example, one would like to know how distances changes with respect to from now onwards. We will use the abbreviation WRT time, or how time changes with respect to speed. WRT means basically with respect, or how water flow changes with respect to time. So basically calculus means that how the thing is changes and how the two things are related to each other. For example, like जैसे कि पानी जिस तरह बह रहा है और जिस तरह वो उसका रुख चेंज हो रहा है और जिस तरह वो मूव कर रहा है और वो कितना टाइम ले रहा है फ्लो, किस तरह कितने टाइम में जो है वो फ्लो हो रहा है, तो ये चीज़ कॉन्टीन्यूसली हो रही है एंड हम इसको किस तरह मेजर कर सकते हैं विद इन टाइम. दैट थिंग इज़ कॉल्ड कैलकुलस. इसको हम कैलकुलस कहेंगे. दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस. Okay, so first thing that comes in this lesson in the first unit, that's about real numbers. So if I talk about real numbers, what are real numbers? Real numbers basically include rational numbers like positive, negative number. It can be positive number, it can be negative number, it can be fraction number, and irrational numbers. In other words, any number that we can think of except complex number is a real number. For example, 3, 0, 1.5, 3 over 2 root 5 are real numbers. Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, square root of 2, square root of 2, square root of 5, 8, 9. Rational means that basically in fraction form like 4 over 5. Irrational means that it's not in fraction form. And that is complex numbers are basically that are undefined, that are going on continuously, but we don't know what the exact point is. 3, 0.15 and so are real numbers. And this is the basic chart for real numbers. Rational numbers, as I already told, that's a fraction. Integers are positive and negative numbers. Like for example, I draw a plane here. I will write in the middle 0, as like in mathematics you have studied about coordinates and you do know about we do know about the line. So from left to right the numbers are always positive, positive 1, positive 2, and up to go so on. That's positive infinity. And on left side it's minus 1, it's minus 2, minus 3, and minus infinity. So these negative and positive numbers are integers. Whole numbers, basically whole means that starting from 0. So 0 to up to so on the numbers are coming. Natural numbers start from 1, 1, 2, 3, 4. Irrational numbers are in radical form. These are the main thing, or you should know about this thing, what are real numbers. Next thing comes about order properties. Order, when we look at the word order means the thing comes in mind that it can be less than, it can be more than, or it can be equals to. The numbers can be. So basically in book that's mentioned in mathematics, there is an area of order of set. Like the set is, what is a set? Collection of things, collection of numbers. We would not go into the general conceptions that involve set theory and other high level stuff, but we will define the order of real number set as follows. Like how you can compare the numbers, how you can compare the variables with an other variable. So here a and b is it's an unknown number, it's a variable. Here I will assume that we are all comfortable working with the symbol less than. This is less than sign, which is read as less than, and the symbol that's more than, greater than. I'm assuming this because the stuff is covered in algebra before calculus. So with this in mind, we can write the above statement as less than or greater than. So main thing here, just where I mentioned about greater than, less than, that how the numbers we are comparing. So b minus a is positive, then we can say that b is more than
So b and negative a they are. So positive numbers, remember, keep in mind this thing, positive numbers are more than the negative number. So plus 2 is more than minus 2, and this sign is of more than. So they said that b and negative, they use the variable here b and minus a. So b and minus a, it's mean b is positive, so b is more than minus a, because a is any negative number that is less than the b, and b is positive number. A statement involving less than are called an inequality. So when the basically when we solve simple equation, like for example right here 2 plus y equals to 5, so here equal sign, so this is equality. But when there is, we are going to compare them, less than equal to sign, less than more than sign we are using, so it's mean that that's inequality, like they are not equal to each other, but they are more than and less than to each other. Then some number comes as like I told the main thing about like positive numbers are more than negative numbers. So in the book it's mentioned correct inequalities. And what are the correct inequalities? 3 is less than 8, minus 7 is less than 1.5. Yeah, that's right. Minus 7 is less than, it's less than 1.5. 1.5 is positive number, so that's more. 8 is bigger number than 3. Yeah, that's right. Negative 12 is less than equals to x. X can be any number that is more than negative 12, and it is less than equals to 12. If I write this one into inequality form, it's mean that minus 12 and it's going to up to so on, and x is maybe it's equals to, or maybe it's less than, maybe it's less than, or maybe it's equals to x. Then pi comes, pi is 3.14 value, negative 3.14 is more than negative 12. Yeah, that's right. So some inequalities are there, we are saying that 2 is more than. Now if you don't know like which is the more than less than sign, then you will get your answer wrong. If you are mentioning like this 2 is more than 4, pi is less than 0, like 3.14 positive is less than 0, how this can be possible? 5 is less than negative 3. Remarks. So to distinguish verbally between number that satisfy a is, so whenever there is like this sign come, greater than sign under it, it's a line mentioned, that's mean it's more than or equal to. We shall call a non-negative if a is more than equals to 0, positive if a is more than 0. Thus a non-negative number can be either positive or a 0. This is the main important point. This can come in your MCQs. Alright, next thing comes interval notation. What is interval notation? First of all, we discussed about inequality, how we can represent the inequality into the interval notation, how we can write it. So we will see that. For example, I have right here 5 is less than equals to 10. No, first of all I'm writing here 5 is less than 10. I'm going to draw a line. Okay, so here are the numbers. I'm mentioning here 0 because it's positive numbers, so I'm starting from 0 here. Then it's 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, and then up to so on. Here it's 10. And if I increase this a bit more, so positive infinity. So they said 10 is more than 5. Now here it has no equal sign mentioned, like it just mentioned it's less than. 5 is less than 10. So we will draw a line, start from the 5, and we will make an open circle. Open circle we make because the 5 is not including. It did not mention, they did not mention here that it's less than or equals to 10. 5 is just mentioned 5 is less than 10. So we just make an open circle on it and we draw a line from it on the way of positive infinity on right side direction, because 10 is more than 5. Okay, if it's mentioned here 5 is less than or equals to 10, अगर यहाँ पे आपको mention होता है कि 5 जो है वो 10 से छोटा भी है और उसके equal भी है, then how you can make the line, how you can show it's on the number line. Same number line I will make here, but one thing is different. When the numbers including, जब equal sign के साथ नीचे ऊपर जो है वो लेस देन या फिर ग्रेटर देन साइन मेंशन हो और साथ इक्वल साइन भी हो, तो हम ओपन सर्कल की जगह जो है फिल्ड सर्कल बनाते हैं. कैसे?
लाइक फॉर एग्जांपल 0 1 2 3। तो हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास लेस देन या फिर मोर देन साइन जो है वो भी मेंशन और साथ नीचे ये लाइन डैश लाइन सी लगी हुई हो, इसका मतलब होता है बेसिकली इक्वल, कि ये इसके इक्वल भी है या फिर इससे बड़ा या इससे छोटा। तो हम तब उसमें जब हम नंबर लाइन पे उसको शो करते हैं तो हम फिल्ड सर्कल बनाते हैं, यानी कि उसको फिल्ड करके सर्कल बनाते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर जो है सिर्फ लेस देन मेंशन था तो मैंने उसको सिर्फ ओपन सर्कल बनाया क्योंकि वो इंक्लूड नहीं करा था, दैट्स नॉट इंक्लूडिंग द 5, दैट्स वाई। बट हेयर इफ़ यू लुक it's including the 5 because that's equal they are saying. So 4 5 6 and then I will move on to the positive infinity. अब मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगी, 5 से वो कह रहा है कि 10 जो है 5 से बड़ा है और ये 5 के इक्वल भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 5 पे जाएंगे और 5 के ऊपर हम बनाएंगे एक सर्कल एंड दैट वी विल डू द colored. So now what we will do, I will draw a line in the direction of positive infinity to till 10, and you know it's increasing 6 7 8 9 10. So then I will draw a line with red color. So basically here this is not including, that's why it's open circle. And if you look at the second one, it's including, that's why it's filled circle. Now how we can show this inequality into the interval notation form? So 5 is less than 10. Whenever we mention the infinity and positive infinity, negative infinity, we always use the curly bracket, this bracket for positive infinity, negative, sorry, so on the left side it's come negative infinity, यहाँ पर हम negative infinity लिखेंगे comma and then हम लिखेंगे यहाँ पर positive infinity. करली ब्रैकेट हमेशा जो है, करली ब्रैकेट हम हमेशा यूज़ करते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ, पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ, ऑलवेज यूज्ड विथ पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड नेगेटिव इन्फिनिटी, विद नेगेटिव इन्फिनिटी. सेकेंड थिंग जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब हमारे पास सिर्फ, जैसे कि मैं 2 कंडीशन बताई, ये चीज़ आपको याद करना मस्ट है कि वो नंबर जब इसको इंक्लूड नहीं कर रहा, अब ये यहाँ पे इक्वालिटी का साइन, इक्वल साइन नहीं है, सिर्फ लेस देन साइन है, तो अब आप इसको कैसे इनइक्वालिटी, इसको इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे. तो जो ये इंक्लूड नहीं कर रहा हम उसके साथ ब्रैकेट डालेंगे, कर्ली ब्रैकेट, और ये कहाँ तक जा रहा है, 10 तक, 5 से 10 तक है, तो हम लिखेंगे 5 10. नाउ व्हाट वी विल डू हियर, हम यहाँ पर 5 के साथ लिखेंगे करली ब्रैकेट और यहाँ पे हम डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि 10 तो इंक्लूड कर रहा है ना वो. अब दूसरी वाली जो है उसमें उन्होंने कहा कि 5 इज़ लेस देन और इक्वल 10, सो इट्स इंक्लूडिंग, तो हम कहेंगे कि 5 और 10 और फिर हम यहाँ पे डाल देंगे स्क्वायर ब्रैकेट. तो जब भी इक्वलिटी का साइन आएगा तो हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इंक्लूड कर रहा था, यहाँ पे इंक्लूड कर रहा था, लेस देन और इक्वल टू साइन था, इस वजह से हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है वाली एंगुलर ब्रैकेट. और यहाँ पर हमने 5 के साथ ब्रैकेट क्यों डाली है, सर्कल ब्रैकेट, बिकॉज कर्व ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर इसने इंक्लूड नहीं किया, उसने कहा वो 5 से ज़्यादा है 10 और 5 जो है 10 से छोटा है, तो इसके इक्वल नहीं है, इस वजह से हमने 5 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट डाली और 10 जो है वो इंक्लूड कर रहा है तो हम साथ स्क्वायर ब्रैकेट डाली. तो इस तरह हम देखते हैं इंटरवल नोटेशन. Now we will see the chart that is mentioned in book like interval notation in variable form. A and B can be any number है, यहाँ पर A और B कोई भी नंबर हो सकता है. अब देखें यहाँ पर A और B के साथ कौन सी ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, यानी कि ये इसको जो है फाइनाइट पॉइंट है, A is less than X, X is less than B. So that's why they made a circle on A and circle on B and they draw a line from it. Finite and open circle. Open means that open circle. In book it's fully they use the black color, so it's look like filled circle here, but that's not filled circle. Basically that's open circle. It means that's not including. That's just less than or more than it.
Like for example, if I write the example of a and b, let's say I'm writing here 1 or 5, here it's mentioned. So when I'm going to draw a number line, so I will write here 1, I will write here 5, and then I will make open circle, and then I draw a line, connect it. That's why they said it's finite and open circle. Then they said this is the set notation form, like you are writing x belongs to, then a is less than x and x is less than b के a जो है वो x से छोटा है और x जो है b से छोटा है. अब a और b के साथ डेक्स जो ब्रैकेट यहाँ पे लिखिए स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि ये दोनों इंक्लूड हो रहे हैं. इंक्लूड का मतलब है इनके साथ इक्वल साइन आएगा. तो अगर आप इसकी सेट फॉर्म देखें, x जो है वो बिलोंग कर रहा है, और फिर उसमें उन्होंने कहा है कि a जो है वो x से छोटा है या फिर उसके इक्वल है. x कोई भी वैल्यू हो सकती है, लाइक हम कह रहे हैं a 5 है तो x भी 5 है, तो दोनों इसके इक्वल आ गए. और b भी वो कह रहे हैं कि या तो उससे छोटा है या उसके इक्वल. तो फाइनाइट और क्लोज्ड ब्रैकेट है और क्लोज्ड है, और इसका सर्कल जो है वो फिल्ड होगा. अगर मैं यहाँ पे कह रही 1 और 5 और मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल रही हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, जब मैं इसकी नंबर लाइन बनाऊंगी तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 और यहाँ पे लिखूंगी 5, और ओपन सर्कल बनाने की बजाय अब मैं फिल्ड सर्कल बनाऊंगी. क्यों? क्योंकि ये इंक्लूडिंग है, इनके साथ इक्वल साइन भी आ रहा है, या तो ये मोर देन और लेस देन है या फिर ये इंक्लूड कर रहा है. देन ए नाउ थर्ड वन एज लाइक फॉर द एग्जाम्पल है बिफोर इट हियर. अगर आप यहाँ पे देखें तो ए के साथ जो है ब्रैकेट जो है क्लोज्ड है और बी के साथ ओपन ब्रैकेट है. तो इसका मतलब ए तो इंक्लूड कर रहा है, ए तो एक्स के इक्वल है, लेकिन बी जो है वो एक्स के इक्वल नहीं है, वो सिर्फ उससे ज़्यादा है. तो फाइनाइट और हाफ ओपन बनाया उन्होंने. फिर उसके बाद फोर्थ वाला जो है उन्होंने कहा है कि ए जो है वो ओपन स्क्वायर है, यानी कि इसमें जो कर्ली ब्रैकेट आ रही है, और बी के साथ जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट है. तो जो ए जो है वो हमारा एक्स से है लेस देन, और बी जो है वो इंक्लूड कर रहा है. तो अब बी कलर हो गया क्योंकि बी में इंक्लूडिंग साइन भी आ रहा है, इक्वल साइन भी आ रहा है. फिर उसके बाद कह रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर बी तक. तो इसका मतलब है एक्स जो है बी से छोटा है या फिर उसके इक्वल. तो बी, हाँ, इन्फिनिटी जब भी हम लिखते हैं सेट नोटेशन में लिख रहे हैं, हमने उसके साथ हमेशा कर्ली ब्रैकेट ही यूज़ करनी है, उसके साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज़ करेंगे. वी विल नॉट यूज़ द स्क्वायर ब्रैकेट विद infinity. We always use even the infinity including, infinity means that it's infinite point. You don't know what the exact point is. That's not finite. इसका कोई इख्तिताम नहीं है. It's continuously going. So that's why इस वजह से हम इसके साथ रख रहे हैं open bracket. B include कर रहा है, so that's why we will write here the square bracket. So infinite and closed. So that's it. So that's the main difference about it. So this first lesson is done. I hope you like this lesson. So if you like it, so do comment. So that's it for today. See you in the next video. Take care. Goodbye.